He comes from a lineage of great sages, yogis, and saints from India. He began his spiritual journey at the age of 7 and was fully realized by the age of 14. During this time, he delved into different practices and acquired mastery over Tantra, Mantra, Yantra, Aghori practices, and Yaksha sadhana. He was a siddha, and many masters, saints, and sages used to visit him in solitude to gain wisdom and guidance from him since the tender age. Although he has been helping humanity since childhood, he never disclosed this part of him to the world, and only the advanced yogis and masters were aware of his divine presence. Only in the last 2 years he chose few people from the world and started guiding them in their spiritual paths, and those who have been closely associated with him have witnessed many miracles in his presence. Despite being a family person, he is a yogi and intends to help people entangled in this world achieve Jivan Mukti, liberation while being alive. He is truly in the world but not of the world, and if you really want to understand him, look him beyond his physical appearance and just sit with him, and you will never be the same again. In his presence you will transcend your body and mind and experience the state of Sat, absolute truth, Chit, pure consciousness, Ananda, eternal bliss. Let us fold our hands in front of his divinity and with a heart filled with gratitude and love welcome our spiritual guru, the realized soul, and our enlightened master, Guru Meenakshi Mishra. ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ राम 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 अहम ब्रह्मास्मि। Good morning everyone and good evening to the people from abroad. स्वागत है आप सभी का। So wishing you all a happy Ugadi, Gudi Padwa,
and I think like the entire Indian region is celebrating a new year today. So wishing you all the very best with this new year. And I believe like the US counterparts completed their solar eclipse sadhana. So good that you were able to do that. And now today, it being the beginning of the Chaitra Navaratra. So wishing you all that may the blessings of the goddess reach each and every one of you and reach each and every corner of this creation. So all the people, those who are doing the Navaratra sadhana, please continue with your 9 day sadhanas as you have been doing all these years. जैसे जैसे आप देवियों की पूजा कर रहे थे नवरात्रों में, वैसे करते रहें। साथ ही साथ आज जो हम आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, लाइक वी आर accumulated here. So today we are going to give a sadhanas that can be simultaneously done along with the Navaratras. 9 दिनों की साधना के साथ आप ये मंत्रों का जाप कर सकते हो। Especially Chaitra Navaratra also comes along with Lord Ram, उनका जन्मदिन, and so what could have been a best way to do a sadhana or making a siddhi of the mantra of Ram in these 9 days. ये 9 दिनों में राम के जो मंत्र हैं उसको साधना और सिद्ध करने का मौका मिलता है। Now as we all know, like there are राम को तो आप एक तरीके से जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, and at the same time there is another way of looking at it, very typical in nature, but as you people have been on this path of sadhana, you should know this, कि राम के जो गुरु थे वशिष्ठ, उनकी जो आराध्य देवी या उनकी जो इष्ट देवी थी वो थी देवी तारा। एंड बिकॉज ऑफ दैट देवी तारा की साधना किए थे वशिष्ठ जी, और उन्होंने राम जी को भी उन्हीं के मंत्रों से इनिशिएट किया था। द सेम मंत्रस वे आर बीइंग इनिशिएटेड अपॉन राम, एंड देयर इज अनदर पार्ट ऑफ राम दैट वेरी रेयरली पीपल टॉक ऑफ, इज हिज तंत्र पार्ट। क्योंकि तारा देवी की साधना जब आप करते हो तब आपको तंत्र मार्ग से जाना पड़ता है। साथ ही साथ बिकॉज ऑफ दैट, मानो वो तो स्वयं अवतार हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं कि उनके पास शक्तियां थी नहीं थी, ये तो सब मतलब इट्स लाइक ए टॉक ऑफ ए स्मॉल माइंड। लेकिन क्योंकि उन्होंने तारा देवी की साधना के साथ उनका इनिशिएशन उन्हीं के मंत्रों से हुआ था, सो ही ऑल्सो गेन्ड सर्टन काइंड ऑफ अस्त्र शस्त्र जो कहते हो ना आप, सो ही वॉज बेस्टोर्ड अलॉन्ग विद दैट। तो एक तरीके से देखा जाए तो देवी तारा राम के भी इष्ट देवी हुई। सो दिस कॉम्बिनेशन, जहां पे 10 महाविद्याओं की भी साधना की जाती है, 9 दुर्गाओं की भी साधना की जाती है, और साथ ही साथ राम की भी साधना की जा सकती है। सो दिस कम्स एज ए कल्मिनेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑल टुगेदर, साथ में मिलके आ रहा है। तो in this case I thought like, why not give you a sadhana of Ram that you people can do। जो नवरात्र में 9 देवियों की पूजा पाठ या विधिवत रूप से नहीं भी कर पाते, कम से कम आप ये पाठ तो कर ही सकते हो। तो एक मंत्र दे देंगे आपको, हालांकि मैं 4 मंत्र देने वाला हूं, उसमें से जो आपको पसंद हो, बट आई विल स्पेसिफिकली टेल विच वन टू डू। वो छोटा सा होगा जो आप कर सकते हो। और अगर आप में से कोई भी, लाइक इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड इन राम रक्षा स्तोत्र या राम रक्षा कवच जो है, अगर आप उसका भी सिद्ध करना चाहते हो, दैट कैन ऑल्सो बी डन इन दिस 9 days। वो थोड़ा, इफ यू वांट टू डू दैट, आई कैन हेल्प यू विद दैट ऑल्सो, किस तरीके से किया जाएगा, क्या विधि है,
वो बता दूंगा। बट द थिंग इज, उसमें एक ही चीज क्या हो जाता है कि राम रक्षा स्तोत्र का जो कवच जो है वो थोड़ा बृहत है, और जब आप उसे जाप करना शुरू करोगे, एक बार जाप करने के लिए आपको 15 मिनट से 20 मिनट तो लग ही जाएंगे, लाइक 20 मिनट्स वन जाप। और उस जाप को अगर आप सिद्ध करना है तो आपको 11,000 जाप करने हैं ये 9 दिनों में। सो दैट मीन्स योर एंटायर डे विल बी देयर। और क्योंकि ये इतना वृहत होगा, बट जो साधक इसको सिद्ध करके रखना चाहते हैं अपने आने वाले कल के लिए, कभी भी इस्तेमाल, लाइक दे कैन यूज इट इन द फ्यूचर इफ दे कैन डू द सिद्धि ऑफ इट। So what I did is, instead of just giving you that, which anyways I will tell you to at least listen and read it every day, एक बार तो भी कम से कम, या तो 11 बार कम से कम पढ़ो उसे या सुनो, that can be done. So 111, 111, 1001, this goes on. जिस तरीके से भी आपके पास समय हो, आपकी स्थिति जैसी हो, उसके हिसाब से, like you check as per your convenience. Now the world has changed. Now we say like as per your convenience. Earlier it was like the other way around, but now, so उसके बदले I have come up with a very simple small mantra that if you chant right now, you will be able to realize like how powerful it can be. And as all of you must be busy, like many people have to prepare so many things for this day, उगादी के लिए और गुड़ी पड़वा के लिए, और all these celebrations that you people are doing. So we'll keep it short and I will just give you the process, और ताकि आप, क्योंकि सुबह सुबह फिर आपका नवरात्र के भी शुरुआत के लिए आपकी पूजा विधि जो भी है वो सब शुरू हो जाएगी। सो विल कीप इट शॉर्ट, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मैं पहले बता देता हूँ कि लाइक ये विधि के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत होगी, व्हाट ऑल थिंग्स विल बी नीडेड इफ यू वांट टू डू दिस। इज वेरी सिंपल, एज आई सेड, वी हैव नॉट केप्ट इट एलैबोरेट। बहुत सरल तरीके से जैसे आप कर सकते हो वो सारी चीजों को बता देता हूँ। डोंट वरी, आई हैव रिटन इट डाउन, दैट्स व्हाई देयर इज अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ, एंड आई कैन शेयर दिस विथ यू सो दैट you can arrange all the things in the sequence. पहला चीज जो जरूरत पड़ेगी आपको, दैट इज अ रेड मैट, एक लाल कलर का मैट जिसके ऊपर आप बैठ के साधना करोगे। कहाँ पे करना है, वेयर यू हैव टू डू इट, you have to sit in your puja place and do the sadhana. What color of cloth you should be wearing, it should be yellow or red, even white can be taken into consideration, but yellow and red most preferably ये आप पहनना है। देन योर फेस शुड बी टुवर्ड्स द ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि आप अपने मंदिर में बैठे हो, मेजरली योर फेस विल बी टुवर्ड्स द ईस्ट। इफ इन केस योर टेम्पल इज नॉट सिचुएटेड इन दैट वे, आप आसन जब बिठा के डाल के जब बैठते हो, व्हेन यू आर सिटिंग, योर फेस शुड बी टुवर्ड्स द ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। देन व्हेन कैन यू डू दैट, कब करना चाहिए? यू कैन डू इट इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग एज वेल। सो व्हेन यू आर डूइंग इट इन द मॉर्निंग, आप तो पंच उपचार करते ही होंगे कैसे भी। पंच उपचार मतलब देयर इज नथिंग एल्स बट अ वेरी सिंपल वे ऑफ, व्हेन यू स्प्रिंकल वाटर, then you put chandan or kumkum, then you put the flowers, then you light up the diya, bati means, and then agarbatti and prasad. So these are the 5 things जिसको आप पंच उपचार कहते हो। सो जनरली बेसिकली यू कैन डू द सेम पंच उपचार, अगर आप सुबह सुबह ये साधना कर रहे हो तो पंच उपचार कर लो। शाम के समय में भी अगर आप कर रहे हो तो आरती जैसे करते हो ना, यू डू दी आरती इन द इवनिंग, संध्या काल में जैसा करते हो, यू कैन डू दैट, एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट दी प्रोसेस। इसमें और चीज क्या चले लगेगा आपको, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल बी नीडिंग हियर? यू विल बी नीडिंग एटलीस्ट 3 diyas or 6, up to you, either 3 or 6। अच्छा, ये 3 दिया किसके नाम पे लगाना है? इफ यू आर जस्ट लाइटिंग अप 3, सो उनका नाम भी बता देता हूँ, लाइक हाउ एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल बी डूइंग, मैं एक एक करके बता दूंगा। सो 3 या 6 दिए लगेंगे आप। सो नेक्स्ट, वंस द पंचोपचार इज डन एंड यू हैव लाइटेड अप द दिया विद द मंत्र दैट आई विल शेयर विथ यू,
उसके बाद देन टेक ए संकल्प आज टू, बिकॉज आज यू आर स्टार्टिंग इट टुडे। आप चाहे तो एक ही बार 9 दिनों का संकल्प ले लो, यू कैन टेक इट फॉर ऑल द 9 days, और यू कैन डू ए संकल्प एवरी सिंगल डे बेस्ड ऑन योर comfort and your convenience can be said. Okay, but if you have taken a sankalpa, keep it up to that. उससे कम नहीं करना, उससे ज्यादा हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कम नहीं होना चाहिए. So you have to decide like how many times you are going to chant the mantra, because what the mantra that I am going to give is, it is just a very simple 6-7 words will be there. So आप ज्यादा कर सकते हो उसको. So based on that you can plan it. Then once you have taken the संकल्प कि अगले 9 दिनों तक मैं क्या क्या कर रहा हूँ या क्या क्या कर सकती हूँ, like how many times I'm going to chant this, then you can also read or listen. मतलब ये मंत्र के अलावा भी, apart from the mantra, you can listen to the Ram Raksha Stotram during these days. As I said, you can even read it. अगर आप कोई सिद्ध करना चाहते हो, do let me know, I will guide you how to do that. उसके बाद इन these 9 days try to visit temple, क्योंकि देवी माँ का भी अभी पूजा पूजन सब अच्छा से हो रहा होगा. So if possible, visit temples at least once, and if you can go all the days, और अच्छी बात है. And on the 9th day, anyways, जो भी नव दुर्गाओं की साधना कर रहे हैं, they will do a homam in their home anyways. उनके घर में नवरात्र के दिन तो कैसे भी यज्ञ होम तो होगा. अगर आप चाहो तो आप अपने घर में भी वही कर सकते हो. अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो, you are chanting the mantra, you can do a small little homam at your home on the 9th day. कौन से मंत्र से? The same mantra that you have been chanting, उसी मंत्र से, so that उसका क्या हो जाए, उसकी भी एक पूर्णाहुति हो जाए. The 9 days साधना हो गया. So you did the sadhana for 9 days and its completion is done. Now especially people from the US, those who cannot do the process for especially with the fire, अगर होमम यज्ञम नहीं कर पाते हो आप, if you have a backyard, if you are able to do that, that's good. अगर नहीं है, then again we have done the same thing. You light up a diya and akshat means rice smeared with turmeric. You can do that. Even if that is not there, then you can do the same thing with flower petals. ठीक है, मतलब मंत्र जाप करते हुए एक बार, जितने बार मंत्र जाप करते हो उतने बार you have to put the rice or the flower petals. So ये किया जा सकता है. तो मंत्र, जो भी मंत्र आप जाप कर रहे हो उसके हिसाब से ही आपको आहुतियां देनी है. One thing that I always keep on saying, if the females are doing the sadhana, यज्ञ में आप घी नहीं डालना है, आपको गूगल ही डालना है. You should not be putting ghee into the fire. And take help of any of your family members, male family members, those who can, if they can do that. If not, take the help of any pujari pandit अगर वो कर सकते हैं. And in case nothing is there, then finally you just fold your hands and you do it. There is no other way. अगर कोई भी नहीं है तो क्या करोगे? So then you have to do it, but just ask for forgiveness in that space, or rather asking for forgiveness, ask for their grace in such a way that you have given me this, so this is what I can do, so you accept. एक प्रार्थना कर सकते हो आप उनके लिए. So this is the basic things that you have to do. And now ये वाला जो whatever this simple write up is there, I'll be posting so that you all know like what to do. तो यहाँ पे जो हम 6 दिए लगाएंगे, लाइक 6 दिया और 3 दिया. अगर आप सिर्फ 3 दिए लगाते हो, if you have just 3 diya that you are lighting up, one should be on Guru Ganpati, means one on the name of Guru and Ganpati. The second one should be for Sarva Devi Devata, मतलब आपके इष्ट देवी देवता के साथ सर्व देवी देवता, मतलब all the gods and goddesses. And the third will be on the name of Devi. कौन सी देवी? देवी तारा. And if you are, these are the 3, okay? One is for Guru Ganpati, the second is for Sarva Devi Devata, and the third is for Devi Tara.
Now, if you are doing it for 6 diyas, there is nothing to be confused. अगर आप 6 दिए के लिए लगाते हो, the first one goes as for Guru Ganpati as well as all Devi Devatas. Okay, Guru Ganpati, Sarva Devi Devata. The second one would go on the name of Ram. The third one would go on the name of your Ishta Devi Devata. See, let me tell the sequence again. Might be I just crossed it over. The first one, Guru Ganpati and Sarva Devi Devata. The second one goes for your Ishta Devi Devata, या तो आपकी कुल देवी देवता जो है. अगर आपको अपने इष्ट देवी देवता या कुल देवी देवता नहीं पता है, like you don't know that, even that also still you can light up a candle saying this is for my इष्ट देवी देवता और कुल देवी देवता. Then the third one goes for Ram. Okay. Then the fourth one goes for Devi Tara. And as we all know, Devi Tara has 3 swarupas. एक है उग्र तारा, the second is एक जटा, and the third is नील सरस्वती. Okay. So 3 diyas on their name. एक उग्र तारा के नाम पे, दूसरा एक जटा के नाम पे, और तीसरा नील सरस्वती के नाम पे. So this will make 6 diyas, right? 6 हो गए. So if anybody is writing it up in the sequence, please post it in the group for the benefit of others. So ये sequence है. Okay. जैसे आप दिया जलाते हो, if you don't even know the mantra, how to light up the diya, and but आप मानसिक रूप से in any language that you are comfortable with, you can say the same things. कि जिसके नाम पे आप दिया जलाते हो उनका नाम लेते हुए कि मैं ये जो दीपक जला रहा हूं ये आपको समर्पित है. आई एम लाइटिंग अप दिस दिया ऑन योर नेम. तो देर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. कोई मंत्र की जरूरत नहीं है. आप अपने, अगर आप मन से ध्यान से उसको करते हो, दैट इज गुड इनफ. इफ यू आर डूइंग इट विथ complete devotion, that itself is enough. And now, if you are all ready, please close your eyes. I will be just giving you the mantra that is you can chant. Especially as I said, this is for, we'll be giving 2 specifically. One is for Devi Tara and the other is for Ram. So क्योंकि इष्ट देवी तारा देवी हैं, तो पहले तारा देवी का मंत्र सुन लो, और मैं ये मंत्र आपको ग्रुप में भी दे दूंगा. So I'll be posting it in the group so you people can do that. So please close your eyes and listen to it carefully. Calm yourself down. बिल्कुल शांत होके बैठे. Free of all the clutters. बिल्कुल relax and attentive. देवी तारा. देवी तारा का जो स्वरूप है, just imagine that image in your mind. And the difference between Kali and Tara is a little towards like she is hefty. So that Swarupa of Tara. Just imagine, there is nothing to worry even if you are not able to see the picture or you are not able to imagine. Just focus on the name Tara. And the mantra that you can chant is Om Hring String Hum Phat. Om Hring String Hum Phat. Om Hring String Hum Phat. So this is the mantra that you can chant. How many times you have to do that? We will discuss that after giving you the mantra for Ram as well. So now just fold your hands and now focus on the image of Ram. अब धीरे से अपना ध्यान राम जी के ऊपर. So as I said, there are
few mantras that I am going to chant together, in which you just have to do one mantra in that. But let me just recite them for you so that at least your ears hear those sacred words. क्योंकि तारा देवी के साथ जोड़ के राम जी की ये साधना हम कर रहे हैं, सो इसलिए एक बीज मंत्र युक्त राम का जो चैंटिंग है, ओम ह्रांग ह्रीं रांग रामाय नमः। ओम ह्रांग ह्रीं श्रांग रामाय नमः। ओम ह्रांग ह्रीं रांग रामाय नमः। So this is the mantra that you will all be chanting for these 9 days. ये 9 दिनों के लिए आपको ये मंत्र जाप करने हैं. So this is the main mantra that you will chant, but the other mantras I'm just reciting so that you just listen to this mantra for the benefit of the entire creation, including you and your family. Om Janaki Vallabhaya Swaha. Om Janaki Kanta Tarakarang Ramaya Namah. Om Apadam Paharatam Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Sri Ramam Bhuyu Bhuyu Namamyaham. Om Dasarathaya Vidmahe Sita Vallabhaya Dhimahi तन्नो राम प्रचोदयात्. श्री राम राम रामेति रामे रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. श्री राम राम रामेति रामे रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. And the Bij mantra, Ram, 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 Ram. And the very simple yet the most powerful, Ram, 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 Ram. So now you can open your eyes. So the two mantras that you will be chanting, वो मैं सिर्फ वो 2 मंत्र को ही ग्रुप में डाल दूंगा, जो कि देवी तारा का है. ओम ह्रीं HRING, ओम ह्रीं स्त्रिंग STRING, ओम ह्रीं स्त्रिंग हुम फट. So I'm writing it in Hindi and English as well for the benefit of others. If you want to translate it into any other language, please do so for the benefit of others as well. And the other mantra that you will be doing is Om Hrang Hring Rang Ramaya Nama. Om Hrang Hring Rang Ramaya Nama. So these are the 2 mantras. I believe like this is something that you can do at least 3 malas easily. हो सकता है ना. देवी तारा का जो है उसको एक ही बार करो, 1 माला. ओके, देवी तारा का, क्योंकि उग्र तारा का भी बीज मंत्र और के साथ है, तो यू जस्ट डू इट फॉर 1 माला. लेकिन राम का जो है उसे आप 3 माला मिनिमम करो. उससे ज्यादा जितना ज्यादा कर सको, दैट्स मच मच बेटर. ओके, एंड लेट्स से some of you is not able to do that. Let's say the females are not able to do that. What can they do? अगर ये सारी चीजें भी नहीं कर सकते,
मंत्र, ये मंत्र भी जाप नहीं कर सकते। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट द वेरी सिंपल वे, मानसिक रूप से या तो राम का बीज मंत्र जो रांग है, RANG, जिसे अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो रांग जो है वो बीज मंत्र जैसा आप you just can chant within yourself or the name of Ram, directly chanting Ram 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 within you. So this is something that you can do. लेकिन जब आप संकल्प लेते हो, when you are taking the sankalp, you decide like how many times you are going to chant. Yes, Deepika ji, in the mansik way. That's why I'm saying, like, certainly at times we are not able to sit and doing the puja. Even when you are traveling, okay, while traveling also do the same thing. Mantra jap to aapke andar koi nahi rok sakta. No one can stop that. It's just like your breath coming and going out, so nobody can stop that. उस चीज को आप कर सकते हो। तो ये दो मंत्र आप लेके चलो, बट डिसाइड हाउ मेनी टाइम्स यू आर गोइंग टू डू इट। बट एज आई सजेस्टेड, देवी तारा का सिर्फ एक ही माला करो, ओनली वन माला एवरी डे। राम जी का जो मंत्र है उसे आप कितने भी बार कर सकते। कमिंग टू राम रक्षा स्तोत्रम या तो राम रक्षा कवच जो है, अगर आप उसको सिद्ध करना चाहते हो, प्रोसेस सेम रहेगा। द थिंग्स दैट आई सेड, इट विल ऑल बी द सेम। द ओनली थिंग इज द चैंटिंग, द मंत्र विल बी डिफरेंट। रुद्राक्ष माला के ऊपर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देन कमिंग टू, लोग कभी कभी कहते हैं कि आप राम का मंत्र रुद्राक्ष के ऊपर कैसे करवा सकते हो। सो जस्ट अ लिटिल throwing a little light on them कि राम शिव की पूजा करता है और शिव राम की। सो रुद्राक्ष से किया जा सकता है ना। इफ somebody is your इष्ट देव, why cannot you? बिल्कुल आबाजी तुलसी के माला के ऊपर कर सकते हो, लेकिन तारा देवी का तुलसी के ऊपर मत करना। तारा देवी का रुद्राक्ष के ऊपर ही करो। देवी तारा जो है, उनका नाम ही वहीं से आता है, तारा मतलब जो तारण करती है, मीन्स द वन हु सेव्स यू फ्रॉम द टफेस्ट ऑफ द टाइम्स, डिफिकल्टीज ऑफ योर लाइफ। तारण करने वाली देवी जो है वो तारा देवी है। Now somebody was asking me yesterday and I was talking to them, says, why do you always see like Kali in such a terrifying state, and always she's walking in darkness, and she looks all ferocious and all those things. I said, that's the beauty. That is actually the beauty of her. डर उसे लगता है जो उसे डरता है। But the beauty that I want to say, I was just want to give one thing that after this, you will just say, wow, who can be like this? देखो, एक ने जहर पी लिया, so you are thankful to them, right? When this person asked me कि देवी काली जो है, तारा जो है, वो अकेले क्यों घूमती है, स्मशान में क्यों घूमती है, अंधेरे में क्यों घूमती है, ऐसी क्यों घूमती है? Then from my little understanding, I simply said, can't you understand what she is saying? Said, what? I said, see, she has chosen the darkest of the night. She has chosen to break down all the rules and regulations. She has chosen to be independent. She has chosen to be the strongest. And more than that, the indication that you learn that when Devi Tara ya Kali is walking in darkness and in all the places that are fearful, fearsome, and itself she is looking like that. I said, she is walking alone many a times, you see. And that's her assurance to you. What's the assurance? The assurance is she has chosen all these things, indicating that when you are in such space in your life, जब आप वैसे जीवन में अंधकार में चलते हो, जब आपका जीवन मानो जैसे भयाभय स्मशान की तरह है, you are so fearful in your life, when the night is darkest in your life, when the sounds, the visions are dreadful and terrifying in your life, remember, I walk with you.
जब ऐसे आपके जीवन में घोर अंधकार चलता है तो मान लेना कि मैं तेरे साथ चल रही हूँ. एंड दैट्स वेयर आई अंडरस्टैंड लाइक द ब्यूटी ऑफ इट. इज इट? Because when the dark hour comes, nobody will be there along with you. But you see, I walk in darkness. So you are never away from me. और जिस दिन धवल जी मुझे ये समझ में आया, उस दिन से ना अंधेरे से प्यार हो गया, rather than getting fearful of that. Because that day I realized that I'm not walking into darkness, because she says, I am that itself. So the moment I entered into the darkness, I entered as if she is walking along with me. I am walking into her. And that day, I got liberated from that childhood fear of darkness. And that was a realization that was so profound. Might be very easy for you people, but for a small kid of 7 years, it was a profound experience, because it also must have had fear of darkness and all those things, right? And then he got the assurance that क्यों डरता है, ये तो मैं ही हूं. And that's why she chose to appear in that way. And how benevolent, you just see. जब सारे साथ छोड़ देते वो कहती है मैं हूं ना. And that's the assurance that comes from her. And that's why she walks alone. She walks in the darkest of the hours. बाकी सारी देवी देवताओं को देखो, सब अच्छे स्थान पे बैठे हैं. No problem. They said, okay, but who is going to pull you out of that? That's what is Tara. तारण करने वाली. कहां से निकालना चाहिए? When you are in the darkest of the hours of your life. And that's where she walks. वो कहती है डर मत, जब जीवन में परेशानियां हैं समझ ले तू मेरे क्षेत्र में. And I am walking along with you. And then if you walk with faith in that space, you know what happens? Everything changes for you. लेकिन क्योंकि देवी का उग्र अवतार है और आप सब गृहस्थ हो, तो सिर्फ एक ही माला कर लो. So one mala would be good enough. Okay, so ये बार कर लो. और राम जी का जो है वो मंत्र को you decide how many times you want to do every day. You can take a sankalp of completing 1100 jap in the 9 days. You can take 11,000. You can take 1 lakh, 16,000, whatever way. आपको जिस तरीके से आपका मन हो आप वैसा उठा लो. और the number of japs, when you are increasing the number of japs, वो increase करने का कारण यही होता है कि अगर आपको कोई मंत्र सिद्ध करने हैं, लेकिन जाप करने के लिए जब आप मंत्र करते हो तो एक बार जाप करना भी काफी होता है. So don't go into the mad rush of doing more and forgetting everything else. वो तभी हो सकता है जब आप संपूर्ण रूप से साधना में हो और कुछ कार्य नहीं करते. Got that? हाँ. During these 9 days, do remember to do some kind of सेवा, किसी भी तरीके से. ठीक है. एंड एनीवेज जो नवरात्र कर रहे हैं तो ऑन द फाइनल डे यू पीपल, आप तो वो देवियों की पूजा के साथ तो छोटे बच्चों को भी खाना खिलाते ही हो. सो दैट्स समथिंग रियली गुड. सो दिस इज द वेरी 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 द माइन्यूटेस्ट थिंग दैट आई कैन कम अप विथ. सबसे सरल सबसे छोटा तरीका अगर किसी रूप से कर सकते हो तो आप ये कर लो. बिल्कुल राजन जी, अगर काव घी है तो इट्स रियली गुड. दीपक अगर आप घी से जलाते हो तो, अगर सारे दीपक घी से नहीं जला पाते तो एटलीस्ट एक दिया घी का जला के बाकी तेल से जला सकते हो. बट आई थिंक गॉड हैज गिवन यू अफ्लुएंस इनफ दैट यू कैन मैनेज टू बर्न घी दियाज दीज 9 days. अखंड दिया जलाने की आपको जरूरत नहीं है, बट द पीपल दोज हु हैव लाइटिंग अप द अखंड दिया, फॉर देम दे विल कंटिन्यू. लेकिन क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ इतनी साधना करते हो, मेक श्योर एज लॉन्ग एज यू आर चैंटिंग उतने देर तक दिया जलता रहे. क्यों? बिकॉज दैट दिया itself is the साक्षी दीप जो कहते हैं, मतलब the witness that you have done this sadhana. Okay, so please do that and I'll be posting it again. राजेश जी, या सुबह भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो. यू चूज द पर्टिकुलर टाइम. और हालांकि अगर राम रक्षा स्तोत्र या कवच का जो पाठ करना है उसको आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेके रात के 7:30-8 बजे तक कर सकते हो थ्रू आउट द डे.
ठीक है, उसके बाद नहीं करते, थोड़ा लेट नाइट में वो कवच का जाप नहीं होता है, मतलब सिद्धि के लिए नहीं यूज किया जाता. So if you are interested in that, please let me know. I'll post the document for Ram Raksha Stotram as well, because there are two versions of it. One is a little shorter than that, but जो प्रचलन में है वो वाला मैं बता दूंगा. So these are the things. Any questions that you have, or we have answered all? देखो कुछ नहीं है, जैसे जैसे आप पूजा करते हो वही करना है, 6 दिए जलाने हैं बस. ओके, एज यूजुअल रेगुलर पूजा यू आर डूइंग, जस्ट यू हैव टू लाइट अप 6 diyas. And all the pointers whatever I spoke, I have written down it in Word document for benefit of others, everyone. So I'll be posting it within few moments, so you all get started. Okay, baki, can we reuse the clay diyas? Yeah, Deepika ji, if you are in such a space where getting it would be difficult, so you can wash it every day, usko dry up in the night so that you can light up again in the morning. Okay, अगर मेटल का है यू कैन यूज द मेटल दियाज एज वेल, नो प्रॉब्लम विद दैट. ठीक है, हवन डेली नहीं, हवन सिर्फ और सिर्फ लास्ट डे पे करना है आपको, ऑन द 9th day. ठीक है, डेली करने की जरूरत नहीं है. एनी अदर क्वेश्चंस? चलो, एंड द नेक्स्ट अश्योरेंस दैट कम्स इज, मंत्र एक बार फिर से बता दे प्लीज. आभा जी, बिल्कुल आपको मैं पोस्ट कर दूंगा विथ माय रिकॉर्डिंग वॉइस. ठीक है, तो आपको आ जाएगा, तो वो कर देंगे. एंड द नेक्स्ट अश्योरेंस दैट कम्स इज, हमारा जागरण शुरू हो गया. सो देयर कम्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी एक्चुअली, कि ड्यूरिंग द महाभारत युद्ध, ओके, one day, like Duryodhan goes to Bhishma and says, you are not literally fighting from our side, you are just acting to be on my side. You are literally not doing any harm to those Pandavas. And मुझे लगता है कि गलती हो गई मुझसे, and you are cheating on me. You are not doing the things from my side. So Bhishma, we all know, then he says, okay, I take the pran, tomorrow I am going to kill either Arjuna or Krishna. Either of them. किसी एक को तो मार ही दूंगा मैं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे सपोर्ट में नहीं हूं. So slowly this word went off and Krishna heard it. Mid of the night, Krishna rushes towards the tent of Arjuna where Arjuna was resting. And when Krishna went there, what did he see? Arjuna is sleeping, snoring. That might be a little masala added to that. I don't know whether he was snoring or not. But it's like Arjuna was sleeping so calm, quiet and snoring. Is what you call as a sound sleep. मुझे लगता है sound sleep का मतलब वही होना चाहिए when the other person is snoring. So sound sleep मतलब बाकी सो रहे नहीं सो रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So when Arjuna was sleeping and snoring, then Krishna goes and wakes him up and says, you are sleeping like this? Don't you know what is happening? Then Arjuna slowly wakes up and says, what happened? He says, you are sleeping like this? वहां पे there Bhishma has taken a pratikya that he is going to kill you. Then Arjuna asks, what are you doing here right now? He says, I came to tell you. The Arjuna says, now I can sleep much better then. Krishna says, why are you saying so? Arjuna says, when you are thinking about me, why should I think about myself? जब तू मेरे बारे में सोच रहा है, मैं क्यों अपने बारे में सोचूं, मैं जाके सो जाता हूं. Now, if that is the condition, why even I will be worried about myself when you, वो कहता है कि जब भगवान स्वयं मेरे बारे में चिंतित है, मैं अपने बारे में क्यों चिंता करूं? And that was the essence. And I tell you once, might be tonight I come and wake you up. अरे उठो उठो, साधना का समय हो गया, उठो उठो. फिर आप क्या बोले, आप कर रहे हो ना. Anyways, these 9 days I've started, and
Yes, I will do my part for all of us. ठीक है. सुधा जी, प्लीज अनम्यूट. प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम. तो अखंड ज्योति जल रही है, उसके अलावा हमें 3 या 6 दिए जलाने हैं। हाँ हाँ. और अगर एक अखंड ज्योति में जो हम दिया जलाते हैं गुरुदेव, वो हम्म. माँ के राइट में, यस. और जो तिल के तेल का दिया जलाते हैं वो उनके लेफ्ट में। लेफ्ट में. तो 2 दिया हमारे मान लो ये जल रहे हैं, उसके अलावा हमें 3 या 6 दिए जो जलाने, वो डेली दिवाली उस कर टाइम दो ना जलाने, घर में, जाप क्या करें। है. देखो, हम्म, जो दिया जलाने की जो विधि होती है ना सुधा जी, हम्म, वी टेक इट इन ए मच लाइटर वे. जितना ज्यादा दिया जलाओगे ना उतना अच्छा होता है. आप अगर पुराणों में पढ़ोगे तो कुछ लोग दिए जला जला के इंद्र बने हैं, कुछ लोग दिए जला जला के कुबेर भी बने हैं. इतनी महत्व है उसका. सो अगर सी ऑलरेडी अगर आप ये आपका अखंड दिया जल रहा है और साथ ही ये 2 दिए तो जलाओगे ही कैसे भी. उसके अलावा आप और 3 लगा दो, इफ नॉट 6. ओके, जैसे भी आपको. हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ज्यादा दिए हो जाए, फिर कुछ लोगों के मंदिर छोटे हो जाते हैं, फिर वहां पे कहाँ जलाओगे उसको रख के. ठीक है, मंदिर छोटा हो सकता है, मन तो छोटा नहीं है, बस. दैट्स व्हाट वी कैन से. ओके, सो आई बिलीव लाइक आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एज वेल. Thank you, and wishing you all a beautiful year ahead and a beautiful sadhana as well. और हाँ, मंत्र साधना शुरू करने से पहले गणपति को, गुरु को ध्यान में रखते हुए, सो दैट कोई भी विघ्न ना आए आपके जाप में. जब तारा देवी का मंत्र भी जाप करते हो तो उसमें भी वही बोलना है, लाइक यू हैव टू टेल द सेम थिंग व्हाइल डूइंग द चैंटिंग ऑफ तारा, दैट आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू चैंट द mantra of Ram. Please guide me, please help me, please protect me in that space as well. मुझे, मेरे परिवार को, like to me, my family, please take care of all of us. Okay, so I'll be sharing it, might be right away I'll be sharing it. So अगर कोई भी डाउट है, like in case you still have any doubt, you can put it in the group. I will try to answer it as fast as possible. Can we please throw some light on the flower process we did it today? Oh, no, I can throw a big halogen on that, Santoshi ji, but the thing is, the people, those who have not done, they will think, what did we miss? No, see, no, you, especially, we all know, like there was a complete solar eclipse out there in US. Majority of the part of the people witnessed complete solar eclipse. और सोलर एक्लिप्स के समय पे ऐसी ऊर्जा बनती है, like their kind of energy is created in which certain sadhanas can be done and सिद्धि सिर्फ 20 से 40 मिनट में हो जाती है. You get the siddhi in 20 to 40 minutes. So some people, those who were able to do that, so they asked me, so we posted it in the US group and they did that sadhana. पुष्प साधना जो आपने जो कल किया है, especially when you did it with the rose flower, because every flower has a different kind of importance to it. And when you did it with the rose flowers, I believe like everybody did with the same, right? So when you are doing it with rose, it has a beautiful, उससे क्या सिद्ध होता है? The siddhi that you get is the beauty in your life, the fragrance in your life, and at the same time, multifaceted, multifolded opportunities, safeguarding yourself because it has a thorn in that as well. And at the same time, it is like a very, very soothing thing. Means आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सुरक्षा, all these things, for all these things that can be done. Okay, अलग अलग पुष्प के अलग अलग तरीके हैं, but as you people don't have the opportunity to get other kind of flowers, I chose to be, I called up Navneet ji and asked like which is the flower that you people can get easily. So he said rose is something. The second one was the marigold, what Navneet ji had, but I didn't know if other people will have it or not, so I just kept it to the rose. इसमें
there is one thing that has to be added in this. Need not worry, आपने साधना जो की है उसका फल तो मिलेगा. But in the olden days, mean in the real path, how it is done is, वो जब सोलर एक्लिप्स होता है उससे पहले एक पर्व काल आता है. In that particular पर्व काल, you have to go to a particular place and pick up the flower. वो समय में जब आप उस पुष्प को लेके आते हो और उस पुष्प की साधना करते हो, तब उसका फल लाइक अमोघ हो जाता है. अमोघ का मतलब होता है कभी क्षय नहीं होगा, मीन्स वो होके ही रहेगा. दैट्स हाउ इट इज. If you ask why so, what particular time, why particular flower? That's the secret of Tantra. Means the gods and goddesses, the celestial beings, ये माना जाता है कि at a particular time they visit a particular plant, tree, flower. उनका उपस्थिति उसी समय में उसी में रहता है. They are available there, and at that time if you are doing the sadhana, you are doing the puja, and then with their permission you are taking it, means you have already blessed by taking their permission and they have accepted that you can take it. और उस पुष्प को लाके आप जब साधना करते हो तो क्या होगा? अमोघ हो जाएगा. But we don't have all that facilities anyways. So what we did, okay, whatever flower we will do the puja in that. लेकिन हिमालय के क्षेत्र में जब जाते हैं, स्पेशली जब योगिनियां होती हैं या फिर भैरवस होते हैं या फिर उनके जितने भी गण हो गए, there are particular plants and there are particular timings. उस समय उस स्थान पे अगर आप बैठ के साधना करते हो तो योर एक्सपीरियंस, इट विल जस्ट बी ए प्लांट इन फ्रंट ऑफ यू. आप वहां बैठो, अगर बता दूं कि ये समय पे यहीं बैठ के साधना कर लो, यू विल बी अमेज्ड लाइक हाउ कैन दिस हैपन टू मी इन जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए फ्लावर. होगा, बिल्कुल होगा. सो वी आर येट टू डिस्कवर मेनी साइंस that are related into the yogic path. Okay, so thank you everyone for being here. Thank you for your willingness to do the sadhana. जब संसार सोने को तैयार है, आप साधना करने को तैयार हो, that's really good. May you all be blessed and may you continue your sadhana. May you find your path to liberation. संसार के चीजें तो मिल ही जाएंगे, but our ultimate focus is one thing. Okay, and anyways, I'll be doing my part from this night, and may you all be benefited of that. Thank you so much. Aham Brahmasmi. Hara Hara Mahadev. Jai Mata Di. I'll be posting the script soon so that everybody can do the process. Any questions, you can put it in the group and I will try to answer it as soon as possible. Thank you so much. So Haribhai, if you are there, you can just close the session, and if you are not there, then I will. Not sure if, because okay, if so you all can leave, because I think like Haribhai would not be around because he said me that he has some work. So let me see, if I leave, then no, then only I am leaving, leave meeting. So you all please have to leave the meeting because I don't have even the rights here to close the meeting down. Okay. Thank you so much.